एग्जांपल लेंगे, बोरॉन 511, सेकंड इज कार्बन 612। एटॉमिक नंबर, मास नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? सिंबल से ऑफ एटॉमिक नंबर, हियर 5, हियर 6, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। मास नंबर, सिंबल A, हियर 11, हियर 12, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, how to determine? A minus Z, 11 minus 5, 6, 12 minus 6, 6, number of neutrons is same, ठीक है। तो अब यहां देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मींस एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ आइसोटोन्स कैसे रहेगा? Atoms of different elements having same number of neutrons in their nuclei are known as isotones। क्या सेम रहेगा आइसोटोन्स में? न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा। What about atomic and mass number? Both are different in case of isotones. Therefore, definition, remember well, atoms of different elements having same number of neutrons in their nuclei are known as isotones। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें कौन सा दिख रहा? बोरॉन एंड कार्बन, these are the आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या ये आइसोटोन्स कहलाएंगे, ठीक है। अभी आइसोटोन नाम क्यों दिया है? तो देखो आपने आइसोटोप पढ़ा है, देन यहां हम आइसोटोन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आइसोटोप में यहां P दिख रहा है, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, और आइसोटोप में यहां N दिख रहा है, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है, इसलिए P इज रिप्लेस्ड बाय N। इस प्रकार से आइसोटोन का ओरिजिन दिया गया है,